So, welcome back. Ms. Wan did mention about starting and completing on time. We'll stick to that. So, we are now going to be talking about the future of gold and gold markets. Obviously, very many things can happen. I mean, who can predict the future? But still, we have experts here who could probably decipher it for us in certain streams. So I would probably, I'll ask them a few questions. I'll ask them to express their opinions, and we'll take that as we go along. I'll also try and see if I can have 5 minutes of questions from the audience, but we'll still try and keep it within the time. We lost some time. No, the point is, somebody had asked 3 years ago or 4 years, what is the markets? I don't know how many of states has happened with clarity. I mean, who would have known that gold is going to be 62,000? We could have invested all our money in gold and kept it if we had known. But we would. I don't think even the exchange, despite various things, was reality at that point in time. So so it's going to be a difficult task. So I would urge you to analyze the comments of each of the speakers in that light. It is difficult for us to predict anything about the future. We see all that is happening in the globe and all that. But let me still take the initial comments. I'll first go to Samadeh. He's from the Gems and Jewellery Council. He's also the president of Swarna Shilpi Bachan Committee. So what are your first thoughts on the gold market in the next 5 years? See, too much into the future is always difficult. I mean, everybody can say gold will be this. So let's keep it within the next 5 years. So, sir, and I will also request as many of my panelists to speak in Hindi as possible or Bengali, please. So what are your initial thoughts? What do you think 5 years from now, what do you think are the major changes or major developments? And sir, when you're talking about it, talk about it more from the consumer point of view, as well as from the artisans and the jewelry trade point of view, sir. Thank you, everybody. Actually, sir, Hindi में बात कर सकता हूँ? Okay. हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली मिला के ही बोलेगा. इधर में जो audience बैठा है, that's a good idea. They are mainly the Bengali. Am I right? Okay. Actually, आपको समझने के लिए एक बात बोलता है सबके लिए. The gold market has been volatile and difficult to predict the recent year. तो इसके लिए गोल्ड जो वैल्यूएशन अप डाउन कर रहा, the buyers are confused. इसलिए बाइंग थोड़ा स्लो हो रहा है. इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है कारीगर का ऊपर. जो आर्टिजन बैठा है, इट इज ऑटोमेटिकली द साइक्लिक ऑर्डर. जो शोरूम में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो कारीगर का पास कैसे काम जाएगा. तो इंडियन गोल्ड पॉलिसी जो है, हमको लगता है ये इज नॉट ए करेक्ट वे. तो एक्चुअली गोल्ड पॉलिसी के लिए सोचना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को. हम लोग का तरफ से जो गोल्ड पॉलिसी के लिए जो सुझाव दिया है, तो गवर्नमेंट शायद अभी तक उस लाइन में नहीं आया. तो इसलिए we are depending the gold purchasing from other country. हम लोग का सजेशन क्या था? सजेशन यही था, नया गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रहा, उसका पास में पहले जो सजेशन दिया था, हमारा देश में बहुत सारे मंदिर मस्जिद जो है, तो उधर में बहुत सारे गोल्ड लाइन पड़ा है. वो गोल्ड को उन लोगों का कोई काम नहीं आता. गवर्नमेंट अट्रैक्टिव प्राइस देके वो गोल्ड गवर्नमेंट उठा लेता है. तो
साल के लिए 10 साल के लिए हमको इंपोर्ट करने का जरूरी नहीं होता। और गवर्नमेंट जो स्कीम चालू किया तो ज्वेलर्स लोग जो है उन लोगों को उसमें रखा नहीं, ये और एक डिफिकल्ट हो गया, वो गवर्नमेंट सक्सेस भी नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग सजेशन दिया था, आप लोग वो गोल्ड प्रोक्यूर कीजिए, उसको 10 साल के लिए, मे बी 5 साल के लिए। इंडिया में इतनी सारे गोल्ड है, बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी है इतना हाई है, वो बार बार हम लोग बोला है इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में, तो गोल्ड प्राइस जो बाहर में है, फॉरेन कंट्री में जो है, इंडिया में जब आता है मोर देन 15% एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर ड्यूटी, इसलिए स्मगलिंग इतना ज्यादा हो रहा और गोल्ड प्राइस इतना हाई। अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको लगता है जो स्टडी किया है, ये साल पूरा बीत जाएगा तो गोल्ड प्राइस कमने वाला नहीं है। इंटरनेशनल जो पोजीशन है तो ये प्राइस मोर देन 2000 रुपीज आउंस निकल जाएगा शायद अप्रैल में ही। Okay. सामना में बहुत सारा ओकेशन है। Right. Thank you. Thank you. All right, Chirag, I will come to you. Yeah, the mic, please. Chirag, very important. You can obviously start with your comments, and I also want you to comment about some of the big changes. You know, if we know how the industry is today, what are the strong points, and there are a few points which are not its strengths. Clearly, the processes, and there's always a constant loggerhead with the policymakers, not because they don't like gold, but there is a stress, as Ms. Vandana said, and I also pointed out that you spend a lot of dollars, and it's a huge financial investment, yet you don't behave like a financial sector. You know, you have a lot of back-end artisans, and as Rajiv said, many of them are actually don't want to come back. So probably in a couple of years, you might actually do machine production. Now, importing and machine producing gold jewelry, I think makes no sense for the economy. Could be a point of view. I'm not saying it doesn't. It could be a point of view. So my question to you, therefore, is how do you see some of the pointers that today are holding back this industry? How do you see them panning out? थैंक यू सोम। देखिए एक्चुअली सोम दो चीज है, अगर हम लास्ट 5-6 साल में देखें और ये एक्चुअली अगले 5 से 10 साल में ये कंटिन्यू होगी। एक चीज है कि कैसे इंडस्ट्री चेंज हो रहा है कंज्यूमर की वजह से, और दूसरा कैसा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। तो एक चीज है कि इवेंचुअली अगले 5 साल में बाइंग बिहेवियर भी बदलेगा और अगले 5 साल में द वे वी डू बिजनेस भी बदलेगा और इंडस्ट्री को उसके साथ होना पड़ेगा। सो जैसे आपने कहा सोम, शायद फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मोर एंड मोर इवेंचुअली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। तो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को सरवाइव करना है तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आज पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, यू कैन नॉट बाय गोल्ड विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ पैन कार्ड। सो अगर हम इस चीज को रेजिस्ट करते रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। We will have to probably now start digesting the fact that industry is here to change. आप अगर कोई भी दूसरे देश में देखें, जैसे आप चाइना में देख ले या आप यूके में देख ले, यूरोप में देख ले, gold is a financial asset. We still haven't looked at gold as a financial asset, despite the fact that consumer gold को financial asset की तरह से ही देखता है, बट इंडस्ट्री उसको फाइनेंशियल एसेट की तरह से नहीं देख रही है। क्योंकि गोल्ड ये फाइनेंशियल एसेट है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसे ट्रीट करे फाइनेंशियल एसेट की तरह, और इसलिए आप ये सारे जो रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, IABX हो गया, पैन कार्ड डिक्लेरेशन हो गया, आपके ऊपर जो टैक्सेशंस आ गए हैं, कैपिटल गेन्स है,
ये सारा चीज उसी वजह से कि गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस एज अ फाइनेंशियल एसेट, और इवेंचुअली इंडस्ट्री को इसके ऊपर अडेप्ट होना पड़ेगा अगले 5 से 6 साल में। ऑलरेडी एक चीज जो हो रहा है कि जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी अडेप्ट होते जा रहे हैं। अगर जो मिड साइज प्लेयर और स्मॉलर प्लेयर जिसकी एक्चुअली नंबर्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली दे विल फॉल ऑफ द लैंडस्केप। Okay, that's interesting. Industry will be seen more, whether it be jewelry or it be others, it will be seen more like a finance sector. So it will probably have to integrate this with that. That's what you're saying. So I'm coming to you, Harish. What are your thoughts on major developments in the next 5 years? Namaskar. Thank you, ICC, for having me here. Some of the things, if we look at it recently, you know, अभी focus सारा है कि किस तरह से business transparent हो जाए और किस business, as Chirag bhai has mentioned, कि किस तरह से business में trust create हो जाए. Because जब हम सोना खरीद रहे हैं तो उसका पूरा value मिल रहा है कि नहीं, तो आप initiatives अगर हम देखें, एक तरह से मैसेज बड़ा क्लियर है कि उस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो है, it has to be worked upon a little bit more. Also, we also have to see from the consumer side who actually buys gold. अभी हमने IGPC India Gold Policy Center, which is a part of IIM Ahmedabad, हमने एक आउटसाइड एजेंसी प्राइस के थ्रू एक सर्वे किया, तो उसमें एक काफी उस सर्वे में ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, एंड उससे जो फैक्ट हमें समझ में आया कि मिडिल क्लास जो है वही ड्राइवर है। अब हमें ये देखना है कि मिडिल क्लास आगे कैसे बिहेव करेगा। सो वी हैव टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें मिडिल क्लास को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मिडिल क्लास को लूज, और नॉट ओनली ऑन द बाइंग साइड, बट आई एम टेलिंग यू वन side also, middle class or the young people are going to drive that. इंडिया का मीडियन एज 27-28 है, अगले 10 साल तक भी 35 साल के ही रहने वाला है, तो यही लोग ड्राइव करेंगे दोनों साइड पर बिजनेस को। इन अकॉर्डिंगली हमारी इंडियन इंडस्ट्री एडजस्ट होती है थोड़ा लेट टाइम में। सिमिलरली गोल्ड में हमें देखना है कि गोल्ड किस तरह से बाय किया जाता है। अभी अगर हम 90s में देखें तो ऑलमोस्ट 67-68% ज्वेलरी होता था, ज्वेलरी एंड टेक्नोलॉजी। अभी वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 40-44% रह गया है। इंडिया में इट इज अ ज्वेलरी डोमिनेटेड इंडस्ट्री। ज्वेलरी की जो डिमांड है हमारी कंट्री में रहने वाली है, बिकॉज उसकी कल्चरल एफिनिटी की वजह से वो ज्वेलरी की डिमांड है वो रहने वाली है। लेकिन अब क्या हमें अगर किसी को, अब मैंने पिछले 5-6 साल से कोई गोल्ड नहीं खरीदा, अब मेरे को अगर कंज्यूमर बनाना है तो क्या काम करने की जरूरत है? तो मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मेरे को उसको एक इन्वेस्टमेंट लगे, मेरे को लगे कि इट इज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, व्हिच आई कैन बी वेरी हैप्पी टू हैव इट इन माय पूल ऑफ एसेट्स। सो इस चीजों पर आई थिंक इन माय ओपिनियन इंडस्ट्री को काम करना है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है, हमारे सर्वे में ये भी रिवील होता है कि except for a very negligible amount of people, the touch point for the consumer is still the jeweler. So jewelers को ही आगे आना पड़ेगा और इस कस्टमर की एस्पिरेशन को समझना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह से उस बिजनेस को अपने पास रखें तो उनकी एस्पिरेशंस को हम पूरा कर पाएं। Well, that's again, I think very specific about technology in the industry. Today, clearly, we have a lot of handcrafted jewelry. 5 years from now, again, this is to all three of you, I want to answer specifically on this. Given all the pressures, okay, of technology, innovation from abroad, we are not doing any innovation on the missionary part of it. Do you think this will sustain? Chirag first. एक्चुअली सोम, कल हम रमेश सर और सनी भाई बैठे थे और हम इसी के ऊपर एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड एक्चुअली इंडस्ट्री हैज बीन लैगिंग बिहाइंड टेक्नोलॉजी कंपेयर्ड टू डायमंड्स या सिल्वर। जैसे हमने सिल्वर का मार्केट इंडिया में बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एक्सप्लोड होते हुए देखा है बिकॉज द इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी।
आज इंडिया में क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो हमारा 60 to 65% हैंडमेड ज्वेलरी है, बाकी का 30 to 40% मशीन मेड ज्वेलरी इवेंचुअली। आप रिटेलर्स की तरफ से भी मार्जिन प्रेशर्स आता है, मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स पे मार्जिन प्रेशर आता है। तो इवेंचुअली ये होगा कि हैंडमेड ज्वेलरी सस्टेन नहीं कर पाएगा इस चीज को, बिकॉज द मार्जिन्स आर श्रिंकिंग एंड इवेंचुअली पीपल विल हैव टू मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। बट अभी ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं किया है। आज अगर आप मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स देखें तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं स्केल कैसे करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करूंगा। और मेरा ये मानना है कि आज हम बहुत ही मायोपिकली टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग में सोच रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी को रिटेलर्स को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। AI will play a big role. So I think as a gold industry, we are at least 5 to 10 years behind other players. जैसे मैं आपको एक थाईलैंड का एक एग्जांपल देता हूँ। थाईलैंड में ज्वेलरी रिटेलर्स ने क्या किया हुआ है, अपने कियोस्क बनाए हुए हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए जहां से लोग सोने में निवेश कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं, कॉइन्स खरीद सकते हैं, बार्स खरीद सकते हैं, और फिर आप उस रिटेलर के पास आइए और उसे एट लो कॉस्ट कन्वर्ट कर लीजिए ज्वेलरी में। तो हमने अभी तक ये सब चीजें की नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही ओपनली अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे देशों में अगर आप देखें, छोटे छोटे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है। सो जैसे मैं कहता हूँ, हम एटलीस्ट 5 to 7 years बिहाइंड है in terms of adaptation of technology, both at the manufacturing end and also at the retail end. Samarji, what do you think? तो एक्चुअली जो बात है एकदम करेक्ट बात है। जो अभी जो जमाना है आया है, रिटेलर को ही पहले सोचना पड़ेगा। दे 3 प्रोग्राम लेने पड़ेगा इंडस्ट्री में। दे हाउ टू जो लॉस जो होता है गोल्ड में, वो कैसे रिकवर करना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। वो जो टेक्नोलॉजी का इंडिविजुअल ज्वेलरी को ज्वेलर्स को ये प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें GJBC जो आगे बढ़ के जो काम किया है कलकत्ता में, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया, जो स्वर्ण शिल्प बचाओ कमेटी का ऑफिस में वो बना हुआ है। लेकिन सम रीजन वो थोड़ा टेक्निकली वो काम चल रहा, विद इन 3 or 4 month हमको लगता है वो पूरा चालू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अभी जो आर्टिजन है, जो हैंडमेड ज्वेलरी है, हमारा हिसाब से हमको लगता है सबने हमारा साथ एक राय देगा कि इसमें मेनली ये बंगाल से जो आर्टिजन है, सारा इंडिया में, सारा वर्ल्ड में उसका मुकाबला में कोई नहीं है। जो आर्टिजन का बारे में हम लोग का सोचना चाहिए, ये आर्टिजन को एडुकेट करना चाहिए। ये उनका जो हाथों का काम, वो कैसे जो नया टेक्नोलॉजी है आया है मशीन का, वो उसके कैसे अडॉप्ट करके वो काम में लगाना है। सोचिए हैंडमेड ज्वेलरी, अभी कास्टिंग आ गया, ये कास्टिंग में कैट कैम आ गया, तो वो जो हैंडमेड ज्वेलरी का अंदर वो कैसे उसको लगाने सकता है आर्टिजन को। इसके एडुकेशन के लिए, जैसा अभी हम लोग डिग्री है, हायर सेकेंडरी, बैचलर, MSc, ऐसा अभी बहुत सारे डिग्री है। हमको लगता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ कीजिए, इंडिया गवर्नमेंट के साथ बात करके आर्टिजन को ऐसा अभी डिग्री देने से उसका भी एक क्या बोलेगा, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में उसको इज्जत देना चाहिए। अभी जो हम लोग का सोसाइटी है, वो कारीगर है, वो थोड़ा डाउन द लेवल में चल रहा है, इसको हाइट में देना चाहिए। हम लोग ज्वेलर जो है उसको आगे बढ़ के उसको सम्मान देना चाहिए, ये हमको लगता है। Thank you. Over to you. Thank you. Samarji, that is what that's exactly what we are talking about, the SRO. We will see. And I'm glad that there was an applause when we said the World Gold Council should train karigars and all. Obviously, we are very, very keen.
I don't know how many of you have read the Niti Aayog report on the status of karigars. I think it's a report which we can work for the next couple of years. But very important, I'll give you one example. We have started an asset training institute, non-profit. We don't charge anything, and it is run by IIGJ in Bombay. Kindly you speak in Hindi, तो सबको समझने की सुविधा होगा, please. मेरा थोड़ा problem होगा, so I will Okay. I'll keep it in simple English. I'll skip. एक institute बनाया है मुंबई में. We are still looking for people to send people for training there. So we can create anything. The industry has to own it. That is why we are bringing the SRO. It is not like we can just suddenly bring 1,000 people and say they are trained karigars, now sell jewelry. It's not going to happen that way. You have karigars. You're using karigars. Every jeweler uses karigars. Why can't they look at the karigars and say, this is how we will treat the karigars, this is the kind of benefits, standardize everything. ICC can do it. Standardize how you deal with karigars. Everywhere, it doesn't matter, because you are a karigar headquarters of the world, actually, not India, because there are so many karigars anywhere in the world. So you should not consider yourself the karigar headquarters of India. You should consider yourself the karigar headquarters of the world. Get the best practices out there and tell people, anybody who doesn't do all this for the karigars, don't buy from him. That's the whole idea of SRO. So now I just want to quickly come back. We talk of the future of the gold markets, and Samarji, you said people will continue to buy gold. Yeah, it's very important, but as a World Gold Council, it's our job to worry all the time about gold. Because don't forget, there are at least 3 markets, I will tell you, in the last 25 years. They have disappeared, gold markets. Saudi Arabia, Japan, Italy. They were very big gold markets 20, 30 years ago. Where are they now in gold? They don't even exist. I mean, some gold is always sold. Anybody keeping gold, everybody loves it because it is money. But otherwise, the jewelry market, the gold market, it's gone. Why do you think that people will continue to buy? The reason I want to say this example and then ask a question. Rupee. India will get stronger. Rupee will become free floating at some stage. I mean, I'm just saying 5 trillion we will reach in 25. Maybe we'll become 7, 10 trillion very soon, next 10 years. Then where is the attraction for gold? In India. If rupee is free floating in all these cases, do you think our jewelry industry will remain as strong as it seems today? It's a question. I don't know. I don't have a view on this. All I'm trying to say is when you're looking at an industry, you also have to look at the surrounding developments. Today, don't forget, you have to put this in Hindi, okay? Don't forget, can you put it? Part of gold demand in India is also coming because it is inflation hedge. Kyunki we don't have a dollar asset. A normal man can't hold dollars, but he can hold, which is converted in dollars. If rupee is made free floating, many of us who are there, we will be investing elsewhere. Already it is happening. We can invest in any stock market, and it is going to only get better as India grows. What do you think is the state of the gold market? Do you want me to put your question Put it first? in I was a little elaborate. So actually सोम का कहना है कि अगर हम देखें कई सारे मार्केट है जैसे सऊदी अरेबिया, जापान, इटली, जो एक टाइम पे बहुत बड़े मार्केट हुआ करते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि काफी सारे चेंजेस हो गए. तो जैसे सोम, मेरा ये मानना है कि हम और ये मेटल्स फोकस का मानना है एक्चुअली कि हमने इंडिया की गोल्ड डिमांड को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. और मेरे पास कुछ इसके एग्जांपल्स है क्यों नहीं लेना चाहिए. अगर हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट डिमांड देखिए, आज से 10-12 साल पहले 300 टन हुआ करती थी, ठीक है. आज इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑन एन एवरेज 160 to 180 टन के आसपास आ गई. तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिमांड हम देखें तो 50% तो नीचे हो गई है. क्यों नीचे हो गई? क्योंकि जैसे सोम ने कहा कि
ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आती थी वो अर्बन इंडिया से आती थी। आज अर्बन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है निवेश करने के लिए, ठीक है। अगर आप मुंबई, दिल्ली, इवन कलकत्ता, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में मैंने काफी साल काम किया है, तो देखेंगे तो ज्यादातर जो यंगर जनरेशन, जो मिडिल क्लास है, वो इक्विटी में पैसा डालते हैं, ठीक है। आज अगर आप देखें तो इक्विटी में हर महीने रिकॉर्ड एसआईपी आ रही है, तो काफी हद तक जो सोने में पैसा जाता था वो इक्विटी मार्केट में आ रहा है। दूसरी बात, इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ते जा रहा है। जनधन के पहले 16% लोगों के पास लोन अकाउंट्स थे और करीबन 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स थे। आज 98% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी बात, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी कहती आ रही है, गोल्ड आज compete कर रहा है एक्सपीरियंसेस के साथ। गोल्ड इज competing against लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, हनीमून्स। जैसे हम कल बात कर रहे थे, एक्चुअली आज शादी में सबसे बड़ा खर्चा होता है प्री वेडिंग शूट पे, लोग 2-3 लाख प्री वेडिंग शूट पे खर्च रहे। तो ऑब्वियसली ये सारा पैसा, एक आदमी के पास बजट तो लिमिटेड ही होता है, राइट। सो ये पैसा जा कहां से रहा है? इवेंचुअली ये जो सारी चीजें, ये गोल्ड की डिमांड को ईट अप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि इंडिया का 1.8 2 करोड़ शादियां हर साल होती है, बराबर है, बट इन शादियों में गोल्ड यूसेज कम होते जा रहा है। सो वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड इंडियाज गोल्ड डिमांड, राइट। दूसरी बात ये है कि पहले लोगों को जब बोनस मिलता था या पैसा आता था तो वो खरीदते थे सोना। आज लोगों के पास पैसा आता है तो वो खरीदते हैं मोबाइल फोन्स, राइट, वो खरीदते हैं नए कपड़े। तो आप प्लीज ये समझिए कि एक लिमिटेड बजट अब काफी सारी चीजें गोल्ड के साथ compete कर रही है। तो मैं सोम की बात से बहुत सहमत हूँ कि इसके लिए इंडस्ट्री को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, यंगर जनरेशन को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे मेरी कल सुबह एक्चुअली किसी के साथ मीटिंग हो रही, तो मैं उनको ये कह रहा था, आपको लाइट वेट की तरफ मूव होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 20-20, 25-25 ग्राम के ही चेन बेचूंगा या 10 ग्राम के चेन बेचूंगा। शायद आपको अपना एवरेज ऑफरिंग 5 ग्राम, 6 ग्राम करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो लोग शायद नहीं देख रहे, वो है कैरेटेजेस। पहले शायद 18 कैरेट का 10% मार्केट शेयर था, 18 कैरेट का 15% मार्केट शेयर है। हमारा मानना है कि अगले 5 साल में 20 से 22% मार्केट शेयर हो जाएगा। तो आप जैसे इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया में 22 कैरेट से लेकर 9 कैरेट तक की सारी ज्वेलरी बिकती है, क्योंकि दाम बढ़ गए तो कैरेटेजेस कम होने लगे। ये चीज इंडिया में भी जरूर है। So Yeah. this is something. Thanks. So that is my point. So I will come back to the three of you and then we will close it. Very important is we should not assume gold will continue to be bought. If we do what we are doing, we have to change in the next 5 years, lot of changes, adoption of technology, options available. So we have to compete as gold jewelry industries. I'll give one more example here. Today, again, this is because it is within the industry. Today, we believe women love jewelry, they wear it, no doubt. But today, more and more women are getting into own businesses, entrepreneurs. Don't forget this trend. There was some time ago, all companies used to say fairness creams, correct? Today, do you see any of them selling those fairness creams as fairness creams? I mean, black is beautiful. Trends will change and they will change overnight. All one has to say is, today anyway, people don't like to be called by gender and all that stuff. I don't know how much of that is going to pick up. Tomorrow, if you just say, why should you wear a jewelry because you're a woman? The entire thing will move. So, all I'm saying is, when you're talking about the future, we should also talk about extreme trends. I'm not saying it's going to happen overnight, so there is no need to panic. But it is very important, therefore, to integrate jewelry with a certain, not with our tradition. We shouldn't lose the tradition. But when a woman wears a jewelry, she should feel she's wearing something really modern, which has got the latest technology coming through her. I mean, when I wear a health watch today, I've been saying this in several things. Sorry, as a moderator, I will come back to your question, but I want to make one more.
none of the gold jewelry, you are wearing it physically, is still giving you anything on a health benefit or a safety benefit or anything like that. But watches have come. When I wear a watch, if I wear, it shows my blood pressure, my heart rate, etc. You are selling so much of gold jewelry which people wear on the body, it shows nothing. Because we don't want to innovate. We don't even think about innovation. We are all the time actually dealing with hallmarking and other stuff. So coming back to that, tell me 2 trends you think is going to actually be very important for the industry in the next 5 years. From your point of view, it could be, as I said, it could be the rupee free floating. It could be technology. It could be anything. Or women completely moving away from jewelry. It could be anything. Can you just say, Harish? So I think I touched upon this. पहला ट्रेंड तो है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह से किस तरह से इसको गोल्ड को पिच करना है एंड क्योंकि उसमें जैसे आप अभी गोल्ड की रेलेवेंस तो प्रूव होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखें और जो ट्रेंड देखें तो गोल्ड की रेलेवेंस अभी आई थिंक अभी लोग जो कह रहे हैं कि गोल्ड हैज बिकम इवन मोर रेलेवेंट. So you are saying people will move into gold as an investment rather than purely as jewelry. So as I said, because अभी भी ज्वेलरी भी मार्केट में अभी जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर वो देखें हम पिछले 25-30 साल का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का ही कंजम्पशन आता है. तो बहुत जबकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया, इनकम लेवल्स भी बढ़ गए, तो वो इन्वेस्टमेंट बाकी सब जैसे चिराग ने बोला कि वो बाकी किसी चीजों में चली गई, बाकी वाइट गुड्स में चली गई. तो अब तो क्यों गोल्ड में क्यों नहीं गई? तो क्योंकि हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं किए. और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी खूबियत है कि उसमें आपको नेसेसरली गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है. उसकी आपको एग्जिस्टिंग गोल्ड को आप लिवरेज कर सकते हैं. जिस तरह से आज आप गोल्ड को सेल करेंगे उसकी फाइनेंशियलाइजेशन उसी तरह से डिसाइड होगी आगे फ्यूचर में. तो वो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है. And in my opinion, that will be the biggest trend. And as I mentioned, so that is one, financialization of gold. What is the next one? So next would be compliances. Very important. The business owners, मैं अपने बेटे से भी बात करता हूँ, तो आज को जो उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है, जब वो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस देखते हैं, तो जो compliances और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, अगर अब आपको भी आई एम श्योर कि अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन, और मैंने एक्चुअली बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ माय बैंकिंग जर्नी जहां मैंने बुलियन बिजनेस में बहुत काम किया, तो वहां मेरा मोस्टली कनेक्शन जो होता था नेक्स्ट जनरेशन से होता था, और वो मेरे को लगता था कि वो मेरी बात को ज्यादा समझ पा रहे हैं. तो वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है दे आर मोर कंप्लायंट. वो कहते हैं कि हमें हमारे बिजनेस को इज्जत ज्यादा मिलना चाहिए. ग्रेट. चिराग, पहली बात आई थिंक जो 2 चीज मेरे को लगती है, एक तो है कि लो चेंजेस इन कैरेट स्ट्रक्चर अगले 5 साल में होगा, जहाँ पे 18-14 का मार्केट शेयर बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और दूसरा लाइट वेट ज्वेलरी का मार्केट शेयर इंडिया में काफी हद तक बढ़ेगा. तो ये एक चीज है. और दूसरा, मैं हरीश से बिल्कुल सिंपल हूँ कि मोर एंड मोर कंप्लायंस, मोर एंड मोर बिजनेस व्हिच हैव टू कंप्लायंट. जैसे सोम एक बहुत ही क्विकली कहता हूँ कि अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे बोलते हैं कि क्रुएल्टी फ्री, फ्री रेंज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज आते जा रहे हैं, और यंगर जनरेशन को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. तो हमें ये देखना होगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री इस सारे कॉन्सेप्ट को कैसे अडॉप्ट करती है. ग्रीन गोल्ड हो सकता है या जो भी हो सकता है, पर ये एक चीज सोचना बहुत जरूरी है. ग्रेट. समीर, एक्चुअली अभी जो मार्केट है, ये बात सही है, जो यंग जनरेशन है, मेनली वुमेन सेक्शन, उसका अट्रैक्शन लेना चाहिए डिजाइन का ऊपर. चिराग जी ने एक बात सही किया, जो ट्रेडिशनली जो ज्वेलरी चलता है अभी थोड़ा चेंजेस आने लगा ड्रेसेस का हिसाब से. तभी पहले ये इंडियन लेडी लोग साड़ी ज्यादा पहनता था, अभी थोड़ा ड्रेस एकदम चेंज हो गया. उसका ड्रेस का हिसाब से ज्वेलरी भी चेंज हो गया. लेकिन ये बात भी सही है, ये इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड है डाउन द लेवल. जो आप लेवल है वो इतना नहीं सोचता गोल्ड के लिए, लेकिन आम
आम जो आदमी है वो गोल्ड इन्वेस्ट का अभी भी सोचता है, जब भी जरूरत पड़ता है वो गोल्ड, जैसे हम अभी की कोयली वो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो कोई चीज नहीं है अभी तक वो कैश कन्वर्शन नहीं आएगा। जहां पे भी जाएगा गोल्ड थोड़ा कमती में देने से उसका घर में बैठ के पैसा मिल जाएगा। ऐसा हमको लगता है इंडिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसको बदली में रुपया मिलेगा इमरजेंसी का टाइम में। इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड फर्स्ट थिंग। लेकिन एक बात बार बार कहना है यंग लेडी के लिए, हम लोग जितना ज्वेलर है जो आर्टिजन है उसको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिजाइन, लाइट ज्वेलरी का अभी मेनली डिमांड है। थैंक यू, ओवर टू यू। Thank you very much. I think all the speakers have given some very good point. I just want to add from my point of view, one more big change. When I say big trend that we will see, I mean, it's already some of them have spoken about it. I think innovation of a different order in handling gold. And I have spoken about it in some group meetings with even NID and other stuff. It's not just about design. It's about what all we can do with gold. I think as the gold prices go beyond 60,000, 70,000, we don't know where it is going to head. Just look at it. 3 years ago, 4 years ago, gold was 30,000. Today it is 60,000. How many people's incomes have doubled in the last 4 years? But gold has doubled actually. So as it increases, you will find enormous amount of innovation. Now, where is it going to come from? Is it going to again be a foreign import because somebody found something which we are going to use it? Or is it going to be from within where we have enormous capabilities, whether it be usage of stones, colored gold? Many of them have already been talked about, but something which we have not seen, innovation in handling gold, in the metallurgy of gold, I think is something which we will face. And I have always said this, we have to be prepared for financial sector reforms because gold is a financial investment, all of us have said, and the more reforms that come on financial sector, the attraction of gold is not going to keep rising, and particularly when prices rise like this. So with those words, I think we will bring this to a conclusion. Any last words, because I need to give the panelists, and I'm going to be at least 10 minutes, I will say for this. Samir, any last few words, and then we will wind up. Anything? एक्चुअली खाली एक ही चीज कहने का है, अभी गोल्ड में गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जो प्रॉब्लम ज्वेलर्स लोग थक गया। डेली जो लॉ आता है, आज भी अभी इधर आने का आगे दिल्ली में 2 मीटिंग हो रहा, तो एक मीटिंग का में हम भी था और एक मीटिंग हो रहा। आप जानता है बोलना चाहिए, एक सबको जानकारी के लिए एक पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो अभी ज्वेलर के ऊपर आ गया। सबको पता नहीं है, वो अभी लागू है, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। एज पर माय नॉलेज इंडिया का साथ जो टीटी है $10,000, लेकिन इसका इंडिया में जो कानून आया बहुत गलत कानून। ओनली 50,000 जो परचेस करेगा उसका आपको क्या बोलेगा, उसका आईडी देने बोला। दिट्स ए वेरी बैड थिंग, इट्स ए मेनी प्रॉब्लम। Yeah, sure. Samir, good point, but I just want to say it is not just this industry. While yes, we have to present, that's why I told ICC, present a proper case to the government, at least as ICC, independent No, sir. associations. A circular is there. No, I know. I'm just saying it is not just this industry. Today, do you know that debt funds, today they are passing it, I think in the parliament, debt mutual funds, which were so far treated as long-term capital gains, the government has changed between budget and now to say, if you put in debt mutual fund from 1st April, it will always be short-term, which means if you're paying 30% tax, you pay 30% tax. Now, everybody is running around now, because huge amount of debt mutual fund. This regulatory thing is always a issue because one segment or the other will always get affected. But I take your point.
I think government should go a little easy on this industry when it comes to a PMLA and all that. There are a set of changes that have to be brought in before it is brought in. Perfectly point. Chirag, last words. No, my point is just be ready for the change that the consumer is going to bring in, adapt to that quickly, or else, you know, we'll have a Thank lot you. of issues. Harish. सो कुछ ऐसा हो जिसमें हमें रेगुलेटर के पास बार बार ना जाना पड़े, अगर उसकी स्पिरिट को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और तो उससे क्या होगा कि क्योंकि सुबह ही एक मीटिंग में मेरे को किसी ने बोला था कि अब बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वही हम ही इनिशिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ हो कि हमारे पास ही सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा हो कि गवर्नमेंट हमारे को एग्जाम्पल लेके बाकी जगह पे काम करे। Good point. I think ICC should take some of this and probably work with the government for the next 5 years. What do we see as a big change? Government's other changes and how this industry will fit in. Any amount of insights will help the government. So with those words, thank you very much for listening to us patiently, and thank you, my panelists, for giving me wonderful insights.